The, so we are entering our ninth chapter. Yes. That is, Rate of surplus value. uh, Rate of surplus value. see, now here here you smell something. Here in the title, not in the body of the chapter, but in the, this is a political game. The degree, the rate of surplus value is a fair statement. The degree of exploitation of labor power is a political gimmick. It will not come afterwards. Huh? It is only coming as a title. Now this is what a Marxist will pick up or a communist will pick up. तो वो exploitation है. ये बातें होएगी, but we should be aware that we are learning economics and we are not into politics. So these things do erupt. The mindset reflects it as that. So he is in fact posing surplus value as exploitation of labor power. That is what he is posing in this in the title itself. So should we start? Yes, Yes. sir. Vishnu, did you see the recording which I link for which I have sent it to you? Yes, sir. And it was Uh, okay, sir. uh, Not bad. except for if you both are also using, now I am also using a mic. So if you I'm both are you are using a mic, then the recording will be absolutely clear. It might I'm not be using now. it might not be as you do it in your office, but it will be 70-80% like that. ठीक है? So I am starting. The surplus value generated in the production of, in the process In of the production by C, the capital advanced, or in other words, the self-expansion of the value of the capital C presents itself for our consideration in the first place as a surplus, as the amount by which the value of the product exceeds the value of its constituent elements. So what he is saying here, that one thing is the self expansion of capital. This is important. And secondly, that portion, that self expansion, the portion of self expansion of capital is the amount of surplus value, and that equals the amount by which the value of the product exceeds the value of its constituent elements. In the second paragraph, he will in detail describe it, but this paragraph is quite fair and straightforward. ठीक है? तो ये समझ में कौन पढ़ेगा? पढ़ो. मैं पढ़ मैं देता हूँ. हाँ अच्छा, पढ़ दीजिए सर. छोटा है ना, इसीलिए हाँ मैं हाँ. पढ़ देता हूँ. हाँ, नहीं बड़ा भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ चलो. Chapter 9, the rate of surplus value. Section 1, the degree of exploitation of labor power. The surplus value generated in the process of production by C, that is, the capital advance, or in other words, the self-expansion of the value of the capital C, presents itself for our consideration in the first place as a surplus, as the amount by which the value of the product exceeds the value of its constituent element. बराबर. So from here onwards, our thread with simple circulation has been broken totally. Now here is the inside factory. What is done here is the inside factory only. नहीं वो ठीक है. Now we are not in the framework of simple circulation. We are in the framework of, from this chapter onwards, we are in the framework of circulation of capital. This is what we should focus upon. So should I read further? Yes, sir. Yeah. The capital C is made up of two components. One, the sum of money C laid upon the means of production, and the other, the sum of money V expended upon the labor power. C C per represents here C per constant, V per variable. C represents the portion that has become constant capital, and V the portion that has become variable capital.
At first then, C is equal to C plus V. For example, if 500 pounds is the capital advanced, its components may be such that the 500 pounds is equal to 410 constant capital plus 90 pounds variable capital. When the process of production is finished, we get a commodity whose value is equal to C plus V into bracket plus S, where S is the surplus value, or taking our former figures, the value of this commodity may be 410 pounds constant capital plus 90 pounds variable capital plus 90 pounds surplus value. The original capital has now changed from C to C dash, from 500 pounds to 590 pounds. The difference is S, or a surplus value of 90 pounds. Since the value of the constituent elements of the product is equal to the value of the advanced capital, it is mere tautology to say that the excess of the value of the product over the value of its constituent elements is equal to the expansion of the capital advanced or to the surplus value produced. So this is the last sentence is, since the value of the constituent elements of the product is equal to the value of the advanced capital, it is a mere tautology to say that the excess of value of the product over the value of its constituent elements is equal to the expansion of the capital advanced or to the surplus value produced. So this is merely repeating the same thing what he has said previously in more general terms. तो ये भी ओके है ना? ओके, इसमें कोई चर्चा करने जैसी कोई बात नहीं है. हाँ, तो बात नहीं इसमें है. और you have to keep in mind behind our backs that this is different from the concept of MCM dash. Finally, it will No, be no, MCM dash. Finally, no, 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 because no. 590 rupees, the original value, the original labor power, that will be हाँ हाँ हाँ. transferred, that will be converted or exchanged with equals. See, what I am trying to, Exchange will be done in equals. what 500 rupees is the actual labor power expended in the final product, and that will be sold at exactly same equivalence of labor power of another product. The same MCM will be follow. नहीं, अभी समझो, ये देखो, sir. एमसीएम में वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं था तब जब हम पढ़ रहे थे. एमसीएम डैश में हम लोगों ने क्या किया, उसने कमोडिटी परचेस की अपने पैसे से और उसने वो कमोडिटी बेची. हमारे पैसे से मतलब वो पैसा तो नहीं सर नहीं लेबर नहीं, में ना. यही फर्क है, हमारे यही फर्क है कि when Marx is looking at it, there is a difference in the approach and viewing it. There in MCM dash, value is not produced, whereas in this process, when one of the constituents of the commodity produced is labor power, and the other thing is means of production, there the concept and the framework changes. Why we should not mix these two together. Therefore, then when we were there, we were talking of circulation, say CMC or MCM dash. That is not the same as MCM. Sir, as later on MCM dash is elaborately explained. अरे We will look after. We will नहीं look after that time. नहीं, now what I'm saying, if that was the case, all these chapters are unnecessary, na? No, very much league. in the sense, Very much league, sir. in the sense from But this. finally, Marx will arrive. MCM is equal to CMC. नहीं चलिए सर, आगे नहीं, चलिए, आगे आएगा सर. देखेंगे वो जब आएगा तब. ठीक है, अभी पढ़ो, हाँ. विष्णु पढ़ो तो.
The capital C is made up of two components. One, the sum of money C laid out upon the means of production, and the other, the sum of money V expended upon the labor power. C represents the portion that has become constant capital, and V the portion that has become variable capital. At first, then, C is equal to C plus V, or for example, if 500 is the capital advanced, its component may be such that 500 is equal to 410 pound constant capital plus 90 pound variable capital. When the process of production is finished, we get a commodity whose value is equal to C plus V plus S, where S is the surplus value, or making our former figures, the value of this commodity may be 410 pound constant capital plus 90 pound variable capital plus 90 pound surplus. The original capital has now changed from C to C dash, from 500 590 pound. The difference is as or a surplus value of 90 pounds. Since the value of the constituent elements of the product is equal to the value of advanced capital, it is mere tautology to say that the excess of the value of the product over the value of its constituent elements is equal to the expansion of the capital advanced or to the surplus value produced. आगे. Nevertheless, we must examine this tautology a little more closely. The two things compared are the value of the product and the value of its constituents consumed in the process of production. Now we have seen how that portion of the constant capital which consists of the instruments of labor transfers to the production only a fraction of its value, while the remainder of that value continues to reside in those instruments. Since this remainder plays no part in the formation of value, we may at present leave it on one side. To introduce it into the circulation would make no difference. For instance, taking our formal example, C is equal to 410 pounds. Suppose this sum to consist of 312 pounds value of raw material and 44 pounds value of auxiliary material and 54 pounds value of the machinery worn away in the process. And suppose that the total value of the machinery employed is 1054 pounds. Out of this sum, this later sum, then we reckon an advanced for the purpose of turning out the product, the sum of 54 pounds alone, which the machinery loses by wear and tear in the process. For this is all it parts with to the product. Now, if we also reckon the remaining 1000 pounds, we still continue, which still continues in the machinery as transferred to the product, we ought to also to reckon it as part of the value advanced and thus make it appear on both sides of our calculation. We should in this way get 1500 on one side and 1590 on the other side. The difference of these two sums or the surplus value would still be 90 pounds. Throughout this book, therefore, by constant capital advanced for the production of value, we always mean, unless the context is repugnant thereto, the value of the means of production actually consumed in the process and that value alone. So here Hmm. what is saying is, irrespective of the value of the machinery, he is trying to explain that what is added to the product is not the total value of the instruments of labor, but only that part of the value that is that is used up in the process of production, or that through wear and tear in the process. So that is what he is trying to explain in this paragraph. So henceforth, the contribution of the instruments of labor to the final product is limited not to the is limited to the amount that it loses, that the instruments of labor lose in the process of production.
and not the total amount invested by the capitalist in purchasing in purchasing the instruments of production. So this is what he is trying, in sum and substance, trying to explain in this paragraph. Surjit, Now any comment? he also told that if we consider that 1,050 pounds advanced in the production process, still the surplus value will be 90. Because uh, if if we allow that 1,054 in left side, that will also reflect in the right side. हाँ ठीक That है. will be now the total capital will be 1,500, whereas the total product value will be 1,590, and the surplus value will be 90. But नहीं पर what इसमें what he told, what amount is exactly wear and tear for production of a fixed amount of products, that will be considered only but the for the product, but the value of the product will not be 1,554 500. pounds. Ah, Ah, it will only be 490, 590 pounds. yes. That is, you cannot, because the reason is which he has not explained in this, because if it were to be so, then in every cycle of the production process, the capital will go on increasing, because in the next production process, again 1,500 rupees will come on that side. Yes. So that will be insensible. So the Mhm. value of the commodity is restricted to 590 pounds. That the Yes. reason for it, which he has given, is that the rest of the value still remains in the instruments of labor. Uh, Labor. So if we are only accounting for the wear and tear that of the value of the instruments of labor that have undergone because of a particular process of production. That is the sum and substance. Even if you add, there will be a problem if you add 1,500 rupees, or if you add 1,554 rupees plus 312 rupees for raw material, 44 rupees for 44 pounds for auxiliary material, and suppose how much, 90 pounds 312. for 90 pounds for the Labor. labor power. The value of that is not the value which he is going to get. So ठीक है, but see what he is telling is, it is many a times stated that it is what the capitalist is trying to get out of the labor process in bourgeois economics is the value of the capital that he has advanced. This is what they try to, so they are saying that it is not surplus value. He is recovering the value of in the product, the additional value in the product which is reflected as profit is reproducing the value of the capital on a yearly basis when you expand it. But that is not the case. That cannot be looked at from that point of view. So padho, कौन Surjit? मैं पढ़ रहा हूँ. Nevertheless, we must examine the tautology a little more closely. The two things compared are the value of the product and the value of its constituents consumed in the process of production. Now we have seen how that portion of constant capital, which consists of instrument of labor, transfers to production only a fraction of its value, while the remainder of that value continues to reside in those instruments. Since the remainder plays no part in the formation of value, we may at present leave it on one side. To introduce it into the calculation would make no difference. For instance, taking our former example, C equal to $410 pound. Suppose the sum to consist of 312 pound, value of raw material 44 pound value of auxiliary material, and 54 pound values of machinery worn away in the process. And suppose that the total value of the machinery employed is 1054 pound. Out of this latter sum, then he reckoned as advanced for the purpose of turning out the product
the sum of 54 Ln, which the machinery loses by wear and tear in this process. For this is all its parts with with to with to the product. Now, if we also reckon the remaining 1,000 pound, which still continues in the machinery as transport to the product, we ought also to reckon it as part of value advanced, and thus make it appear on both sides of the calculation. We should in this way get 1,500 on the one side and 1,590 on the other. The difference of these two sums or the surplus value would still be 90. Throughout this book, therefore, by constant capital advanced for the production of value, we always mean, unless the constant is repugnant thereto, the value of the means of production actually consumed in the process, and that value alone. हाँ, अभी इधर आओ देखो ये जो लिखा है वो जूना है. हम ये ऐसा सोचते हैं कि उसने वो सब खरीदा, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर. और समझो ऐसा हुआ कि 1 बरस के बाद उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो क्या होगा मशीनरी का? अभी जब वो चलती थी फैक्ट्री, तब तक उतना ही मशीनरी का उतना ही वैल्यू प्रोडक्ट को ट्रांसफर होता था. यदि वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो he has not recovered, he has incurred a loss. He has, in the sense that the value that remained in the instruments of labor become worthless, because they become non-use value, because they cannot in any way produce anything. They are not in the production process. So this paragraph can be written in many ways apart from the way he has written. What he is trying to say is that if you add it to the value, when you are adding it to the left hand side, the remaining value of the machinery should be added to the right hand side. So if 54 pounds were actually consumed in the production process and which are reflected on the right hand side, then the value of the machinery remaining after the wear and tear should also be added to the right hand side. That is what he is telling. However, in such a case, the surplus value will continue to be 90 pounds. But we are not taking, when you say that only 54 pounds are transferred, we are taking for granted that the production process continues until such time that the capitalist, through the production process, consumes the 1,554 pounds that he has advanced for towards the instruments of labor. Yeah, we are taking for granted. We have to remember this. We can add many things, And Surjit. there is no other way, because the product will be sold only at the actual cost, Ah, actual value. barabar. If he wants to add 1,000 rupees or 5,000 rupees or 10 hour labor, then it will not be sold. Ah, barabar, barabar. हाँ, So the final, in this way he should have argued that we cannot add those 1,500 rupees to the left hand side and the right hand side, because that will not be the value of the product. Exactly. That is how he should have argued. As a matter of fact, he has argued it in a different way. We इसको हम कोर्ट में कटघरे में खड़े करेंगे ना, इसको छोड़ेंगे क्या मार्स को? उसको हाँ, तो अभी पढ़ो विष्णु, तुम्हारा बाकी ठीक है नहीं नहीं? नहीं, हो आप गया हो गया आपको कहना है, हाँ, ये आपको आपको कहना पढ़ना है. है. बराबर. This being so, let us return to the formula C is equal to C plus V. मैंने previous formula में ये अभी उसने कह दिया है कि the value of the instruments of labor added to the product is only to the extent of They are consumed, of the actually wear and tear consumed of in the the machine. process. ये उसने बराबर, और that can be, पहले कहा है उसके एवरेज निकाल के हम लोग वो ऐड कर सकते. This being so, let us return to the formula C is equal to C plus V, which we saw was transformed into C dash, that is equal to C plus V plus S.
C becoming C dash. We know that the value of the constant capital is transferred to the 2 and merely reappears in the product. The new value actually created in the process, the value produced or value product, is therefore not the same as the value of the product. It is not as it would at first sight appear, C plus V plus S, that or 410 pounds constant capital, 90 pounds variable capital plus 90 pounds surplus labor. But V plus S or 90 pounds variable plus 90 pounds surplus, not 590 but 180 pounds. If C is equal to 0, or in other words, if there were branches of industry in which the capitalist could dispense with all means of production made by previous labor, whether they be raw material, auxiliary material, or instruments of labor, employing only labor power and materials supplied by nature, in that case, there would be no constant capital to transfer to the product. This component of the value of the product, that is the 410 pounds in our example, would be eliminated. But the sum of 180 pounds, the amount of new value created or the value produced, which contains 90 pounds of surplus value, would remain just as great as if C represented the highest value imaginable. We should have C is equal to 0 plus V, that is equal to V or C dash is equal to V or C. The expanded capital V plus S, and therefore C dash minus C is equal to S as before. On the other hand, if S is equal to 0, or in other words, if the labor power whose value is advanced in the form of variable capital were to produce only its equivalent, we should have C is equal to C plus V or C dash. The value of the product is equal to C plus V plus 0 or C is equal to C dash. The capital advance would in this case we not have expanded its value. तो अभी ये पैराग्राफ में what he is trying to describe, he is trying to describe that that portion of the value of the constant capital which reappeared in the product is not what the capitalist is has in mind. What he is saying that is not his purpose. His purpose is not to reproduce the value the value of the constant capital in the product. His what is running in his mind is that he wants to add value with the help of labor, that he has already said that without labor being living labor being an ingredient of the production process, the value of the constant capital cannot reappear in the product. So this is a precondition. So therefore, going back, what he is trying to say is that if we if we keep out of consideration the constant capital and put it to be zero, assume it to be zero, then the surplus value that will be produced will only be a relation between variable capital and the value of the product. The excess of value of the product over the variable capital can be termed as surplus value. So, but in the second part of it, he is saying that we should have C plus 0 plus V. This 0 is surplus or is equal to V or C dash. अभी ये 0 क्या हो गया? तो ये capital constant capital 0 किया है ना? The component of the value of the product 410 pounds in our example would be eliminated. ये हो गया, वो निकाल दिया constant. But the sum of 180 pounds, the amount of new value created or the value produced, which contains 90 pounds of surplus value, would remain just as great
as if C represents the highest value imaginable. If we could have C is equal to 0 plus V or V or C dash, the expanded capital is equal to V plus S. तो इधर इसने वो जो शब्द प्रयोग किया है ना टाइटल में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, तो ये उसको पहले भी उसने उसके ऊपर चर्चा की है कि विदाउट लिविंग लेबर you cannot reproduce the value of the constant capital in the product. ये तो उसने तो वो ये समझ रहा है कि that the surplus value is created just by the living labor or the variable capital that he has employed. ये उसको इसमें से ड्रॉ करने का है, समझा नहीं? ये बुर्जुआ हाँ इकोनॉमी, ये बुर्जुआ इकोनॉमिक्स में सुरजीत नहीं आएगा. हाँ वो बोलता है सी इक्वल टू सी प्लस भी हम बोलते हैं, छोटा हाँ, स्मॉल सी प्लस भी. वो स्मॉल सी जब हम नेचर में डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा, वो तो फुकट है ना. हाँ तब हम वो स्मॉल सी जीरो हो जाएगा. जो जीरो हो जाने से सी कैपिटल सी इक्वल टू भी होता है, देखिए हम वेरिएबल कैपिटल प्लस जो सरप्लस कैपिटल एस भी प्लस ए होता है. नहीं, सी वो डॉट इक्वल टू बी प्लस ए. मटेरियल सप्लाइड बाय नेचर ऊपर उसने लिया है, पर उसको ये अभी मैंने उसके डायमेंशंस दे रहा है. इधर से पढ़ो. हाँ, द कॉमन वो बोलता है, वो सर बोलता है कांस्टेंट कैपिटल, वो सरप्लस, वो जो सरप्लस रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बोलता है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट कैपिटल को उसका अंदर में ले जाना कोई मतलब नहीं है. कांस्टेंट कैपिटल उसमें कोई रोल पार्ट नहीं करता है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू निकालने के लिए. वो बात मैं समझ रहा हूँ. हाँ, मैंने वो क्या कह रहा है कि सरप्लस वैल्यू नहीं जनरेट होगी तो क्या, तो एस हाँ, तब जीरो फिर वो होगा. बोलता है. हाँ, तो हाँ हाँ पर इनवेरिएबली वी को तुम जीरो नहीं कर सकते. इसमें क्या दिख रहा है, वी को जीरो नहीं कर सकते है ना. हम सी को जीरो कर सकते हैं, पर वी को जीरो नहीं कर सकते. एस को भी जीरो होगा, पर वी जीरो नहीं होगा. ये पैराग्राफ में दिख रहा है. This is what we are saying, that we cannot become zero because that is a precondition. That is what he is trying to explain or describe. ठीक है. हाँ, तो कौन पढ़ेगा अभी? विष्णु. विष्णु ने. मैं पढ़ता हूँ सर. This being so, let us return to the formula C is equal to C plus V, which we saw was transformed into C dash is equal to C plus V plus surplus S, C becoming C dash. We know that the value of the constant capital is transferred to and merely reappears in the product. The new value actually created in the process, the value produced or value product, is therefore not the same as the value of the product. It is not, as it would at first sight appear. C plus V plus surplus or 410 constant capital, 90 plus variable capital plus 90 surplus. But V plus S or 90 pound variable capital plus 90 pound surplus capital, not 590 but 180 pounds. If C is equal to 0, or in other words, if there were branches of industries in which the capitalist could dispense with all means of production made by previous labor, whether they be raw material, auxiliary material, or instrument of labor, employing only labor power and material supplied by nature, in that case, there would be no constant capital to transfer to the product. This component of the value of product, that is the 410 in our example, would be eliminated. But the sum of 180, the value of new value created or the value produced, which contain 90 pound of surplus value, would remain just as great as if C represented the highest value imaginable. We should have C is equal to 0 plus V is equal to V or C dash. The expended capital is equal to V plus S, and therefore C dash dash C is equal to S सी डैश माइनस, सी सी डैश डैश minus. माइनस. अच्छा, एक सेकंड. therefore C dash मतलब सरप्लस वाला कैपिटल ना, एक्सपेंडेड कैपिटल, हाँ, माइनस कैपिटल इज इक्वल टू S.
ठीक, as before. On the other hand, if as is equal to 0, or in other words, if the labor power whose value is advanced in the form of variable capital were to produce only its equivalent, we should have C is equal to C plus V or C dash. The value of the product is equal to C plus V plus 0, or C is equal to C dash. The capital advance would in this case not have expended its value. ये कहाँ आता है मालूम है? ये जब हम ये करते हैं ना, क्या आउटसोर्सिंग करते हैं ना, Hmm. तो वो आउटसोर्सिंग के फ्रेमवर्क में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, जैसे अभी ऑन अ लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आउटसोर्सिंग जो कंपनियां काम करते हैं, उधर कैपिटल नहीं रहता है, उधर वी ही रहता है, समझा नहीं? मैं in such cases this might apply. It is not that it is not an assumption. In some areas it may apply that, for example वो आगे वर्किंग डे में बहुत सारी बातें आएंगे जहां हमको there will be no C, that is constant capital. So that scenario he is trying to describe. So therefore he is assuming that C can become 0, S can become 0, but V cannot become 0. Hmm. हाँ, ये Variable इसमें capital. हाँ, वेरिएबल कैपिटल 0 नहीं हो सकता है या प्रोडक्शन प्रोसेस में. आगे पढ़ू. Hmm. From what has gone before, we know that surplus value is purely the result of a variation in the value of V, of that portion of the value capital which is transformed into labor power. Consequently, V plus S is equal to V plus V dash, or V plus an increment of V. But the fact is that it is V alone that varies, and the conditions of that variation are obscured by the circumstance that in consequence of the increase in the variable component of the capital, there is also an increase in the sum total of the advanced capital. It was originally 500 and becomes 590 pounds. Therefore, in order that our investigation may lead to accurate results, we must make an abstraction from that portion of the value of the product in which constant capital alone appears, and consequently must equate the constant capital to 0 or make C is equal to 0. This is merely an application of a mathematical rule employed whenever we operate with constant and variable magnitudes related to each other by the symbols of addition and subtraction only. So, what will happen? अभी इधर इधर सुरजीत तुम कंटेंट कर रहा था ना कि एमसीएम डैश और इसमें फर्क नहीं. अभी इधर फर्क, एमसीएम डैश में 20 रुपए की चीज जब 25 रुपए को बेची, तब वो जो 5 रुपए आया, that 5 rupees was transferred, became new capital. तो 20 रुपये को कैसे बेचेगा सर? नहीं 25 तो रुपया हो गया ना रुपये उसका. सेकेंड राउंड में सुरजीत, in the सुनिए second सर, round the capital became 500 and became हाँ, 25. कैपिटल मनी. हाँ वो हाँ लेबर हाँ, सर कितना लेबर कंटेंट किया प्रोडक्ट में? उसमें नहीं था ना एमसीएम में. ना एमसीएम तो था. कितना एमसीएम में लेबर? वो लेबर, जो भी हो रहा है, एमसीएम जो में भी हो रहा है, हाँ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो वो रहा था सर? सिंपल सर्कुलेशन में वो कह रहा है वैल्यू वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा नहीं था. नहीं नहीं, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है करके उसने 10 बार कहा है ना 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 वो ना चैप्टर में. वो ना ना वैल्यू एडिशन नहीं, वो जो ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा था? वैल्यू का हो रहा था. वैल्यू कब कमोडिटी हो जाता था, वैल्यू कब मनी हो जाता था. नहीं अभी हम उसको ज्यादा वो जो अच्छे तरीके से मेटामॉर्फोसिस सुनिए सुनिए. मेटामॉर्फोसिस में जो हो रहा था सर, ये मेटामॉर्फोसिस ये जो पैराग्राफ को ध्यान में रखकर ये ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा दिखता है, क्यों ऐसा है कि सिंपल सर्कुलेशन में एम सी एम डैश जब होता है, 20 रुपए की चीज वो खरीदता है और 25 रुपए में जब बेचता है, तब ना वो तो नेक्स्ट वो 20 सुनिए 25 का बात नहीं सर.
सुनिए 20-25 का बात ही नहीं। सुनिए मेरा, सुनिए ना, पूरा सुनिए। तो नेक्स्ट साइकिल में उसका कैपिटल 25 रुपया होता था। समझा एमसीएम में नहीं? 25 कैसे रुपए होगा? की चीज को तो 20 ही रुपए में बेच पाएगा ना, बात नहीं ये है। नहीं 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 20 नहीं को 20 रुपये में, 20 को 25 रुपये में नहीं बेच पाएगा 20 सर। को कभी 25 रुपए में नहीं बेच पाएगा सर। नहीं नहीं, वो 20 एमसीएम डैश में, जब सीएमसी में के चैप्टर में एमसीएम डैश आया सिंपल सर्कुलेशन में, तब वो ये कह रहा है कि मैंने 20 रुपए की चीज खरीदी और 25 रुपए में बेची। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो 25 रुपया जो उसको आया वो वापिस उसने लगाया, और वो 25 रुपया जब लगाया तब वो उसका कैपिटल बढ़ा ना। 25 रुपया कहाँ से लगाया सर? अभी अभी 25 सुन, रुपया क्या वो आई वो आई वो वो आई वो टेक, 25 रुपया में वो प्रोडक्ट को खरीद नहीं कर पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं वो जो सुनिए। प्रोडक्ट को तैयार किया, वो प्रोडक्ट तैयार हुआ 25 रुपया, वो बेचेगा 25 रुपया में, 25 रुपया उसको मिलेगा। हाँ, तो कैपिटल हो गया ना उधर, उसको डिवाइड नहीं कैपिटल कर तो पाते उसको कैपिटल तो तुम। सर फैक्ट्री का अंदर में कैपिटल जनरेट हो गया था, जो हो वही गया था फैक्ट्री के अंदर में। वो देख, लेकिन वो बेचेगा, उसका एक्चुअल लेबर जो कंटेंट किया है वही लेबर में बेचेगा। सुनिए, मैं तुमको और वो एक कम ले एग्जांपल, ये सर, एक्सप्लेन वो करो। कम लेबर में बेच पाएगा क्या? वो जो सी सरप्लस जो लेबर उसको एक्सपेंड हुआ प्रोडक्ट में, उसको बाद देके वो बेच पाएगा क्या? बेच अरे नहीं पर पाएगा। एमसीएम डैश में कमोडिटी लेबर पावर नहीं थी ना। एमसीएम एमसीएम डॉट में एमसीएम आ गया सर, वही उसको एक्सपांड कर रहा है अभी। वो वो मनी, एमसीएम मैं हाँ, व्हाट वो अभी व्हाट आई एम वो ड्राइंग अभी योर, व्हाट द सर अटेंशन। एमसीएम में मनी कैपिटल मनी डैश है, वो कैपिटल नहीं है। हाँ मनी, हाँ मनी मनी डैश मनी कैपिटल है। मनी कमोडिटी मनी। हाँ, तो जो तुझने पहला लगाया, वो जो तो 20 रुपया लगाया, उसको हम यदि कैपिटल समझे तो एम डैश जो आएगा वो वापिस कैपिटल हो जाएगा 25 रुपीज। ना व्हाट कैपिटल एम, नहीं समझे सर, वो सर, वो मनी को, वो जो बेचा वो मनी को उसका कैपिटल जनरेट करने के लिए ही वो खरीद किया। सुनिए मैं क्या और आगे बताता हूँ। अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम शेयर मार्केट में गए और हाँ 5,000 रुपया तुमने लगाया, हाँ 2 महीने के बाद तुम्हारा 5,000 रुपया 5,500 हो गया या कैसे 6,000 हुआ? हो गया। तो कैसे एक हुआ? हजार 1,000 रुपया कैसे क्या है? हुआ? कैसे हुआ सर? हाँ, वो बेचा ना कहाँ से उसने शेयर। कहाँ से आया वो मनी कहाँ से आया जो वही बेचा? तो कह रहा वो मनी है। मनी सर, हम फिर पहले का भूल जाते हैं। मनी है लेबर का इक्विवेलेंट फॉर्म, है एसएनएलटी का इक्विवेलेंट फॉर्म है मनी। पर तो वो, वो लेबर जब जनरेट नहीं होगा मार्केट में, व्हाट आई एम तो ट्राइंग टू अपोज वो तो सर is पक्का is the प्यार नहीं fact पक्का। that आपका पास आपका पास हाँ do, सर, do प्यार not है। mix do not mix simple circulation with the circulation of capital. That is what I want to bring. Don't mix. Circulation of capital is inside the factory only. It is अरे not, there is no link in the market. मार्केट में सर्कुलेशन कैपिटल नहीं होता है। नहीं, मार्केट में हाँ, एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल मनी से खरीद किया जाता है। ये एक्चुअल देखो, वैल्यू को एक्चुअल मनी से खरीद किया जाता है, उसमें कोई कैपिटल का कोई प्रश्न नहीं है सर। हाँ, तो इसलिए सरप्लस वैल्यू का प्रश्न नहीं इसलिए है। एम एम सी एम डैश में वैल्यू एडिशन नहीं है, एम डैश में वैल्यू एडिशन है? नहीं है, कैसे नहीं है सर? नहीं है। इट इज फाइनली, वो उसने कहा ना, कोई बदमाश होता है, कोई सिचुएशन का अरे फायदा उठाता है, अरे वो हम वो तो तो लिखा है यहाँ उसने। वो तो भूलभाल, वो एमसीएम जो कैपिटलिस्ट समझते हैं उसको वो बोला है। एमसीएम जो होता है सर, इधर भी मार्क्स बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। एमसीएम जो होता है फैक्ट्री का अंदर ही होता है, तुमने इधर ही मार्क्स बोल रहे हैं। ये देखो, वो सहूलियत के लिए वो पाउंड्स में कह रहा है, इधर वो पाउंड्स नहीं, उसका कंसेप्ट वैल्यू का ही है। ठीक एमसीएम सर, डैश में एग्जैक्टली। मनी के कंसेप्ट था, वैल्यू का कंसेप्ट उधर वापरा नहीं है उसने। ये वो तो मेरे को भूलभाल,
वो कैपिटलिस्ट को वो जो आगे पहले वो बोल रहा था एमसीएम का बारे में जो बोला, उधर कैपिटलिस्ट क्या सोच रहे हैं वो उसको कैपिटलिस्ट मत नहीं बोला। है, वो कैपिटलिस्ट नहीं है मार्क्स के फ्रेमवर्क में से। वो खाली सिंपल सर्कुलेशन में वो अपना पैसा बना रहा है, कैपिटल वैसा का सर्कुलेशन में। और इधर वो ये कह रहा है कि यदि 90 पाउंड्स यदि सरप्लस वैल्यू एक साइकिल में उसको जनरेट हुई, तो उसका कैपिटल जो है वो 1554 का बढ़कर 1644 नहीं होगा। नहीं होगा, ये लेकिन वो तो ये नहीं कह होगा। रहा है वो। कांस्टेंट कैपिटल जितना ही खर्चा होगा लेबर प्रोसेस में, उतना ही उसका वैल्यू आएगा, ज्यादा ये नहीं कि कम नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि उसका जो उलट है, वो उलट भी तुम ठीक ढंग से, व्हाई आई एम डूइंग इट, दैट देयर माइट बी confusion in at this point, that will lead you into bourgeois economics. इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं, इधर सुबुरी से चलना चाहिए। तो पढ़ो, ठीक है, काफी हमने वो हो चर्चा। गया हाँ, कौन ना, ये? मैं हाँ, पढ़ रहा हूँ, हाँ। हम्म, फ्रॉम व्हाट हैज गॉन बिफोर वी नो दैट surplus value is purely the result of a variation in the value of V of that portion of the capital which is transformed into labor power. Consequently, V plus S equal to V plus V dash or V plus an increment of V. But the fact that it is V alone that varies, and the condition of that variation are obscured by the circumstance that in consequence of this increase in the variable component of the capital, there is also an increase in the sum total of the advanced capital. It was originally 500 and becomes 590. Therefore, in order that our investigation may lead to accurate results, we must make abstraction from that portion of the value of the product in which constant capital alone appears, and consequently must equate the constant capital to zero or make C equal to zero. This is merely an application of a mathematical rule employed whenever we operate with constant and variable magnitude related to each other by symbol of addition and subtraction only. हाँ, तो आगे पढ़ू? नहीं, मैं नहीं एक्सप्लेन, वो मैं लिखूंगा तब तब जो कुछ आएगा वो ठीक है। वो क्या नहीं, देखो, if anybody thinks that from a modern perspective the whole subject has been properly explained in all its entirety, then though what he is following is absolutely true, the way in which he has described it is insufficient, and therefore people cannot understand it as it should be understood. They will understand what they think is right or wrong. Its relation, its relation to his thought process, and its reproduction is, addition has to be made. वो ये देखो, हम हमारा मतलब ये है कि हम आगे क्या कहने वाले हैं उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। हमने उसको पहले क्या कहा है उससे उसको कंपेयर करना है। एंड आई एम मेकिंग अ सिवियर क्रिटिसिज्म ऑन पतंजलि। वो पतंजलि के कमेंट्री में चौथे सूत्र को न्याय देने के लिए वो 3000वां सूत्र लाता है ना, उसके कन्विंस करने के लिए। वो गलत है ना। As we proceed, what is going to come next? You cannot take it as a ground for convincing the present paragraph. That is what I am पक्का bound by. जो पहले कहा है उसके ऊपर ही हम जाएंगे। बाद में जो कहेगा वो कुछ भी कहने दो, वो बाद में आएगा ना। पतंजलि ने ये मिस्टेक किया है कि वो जब महाभाष्य, उसने व्याकरण महाभाष्य जब लिखा, तो प्रॉब्लम ये है कि 5वां सूत्र लिखते वक्त ही बोरोज फ्रॉम द लास्ट सूत्र। अच्छा, ये गलत है ना। बिल्कुल। ये गलत है, ये हम नहीं करेंगे। हम उसने पहले जो कहा है उससे हम देखेंगे।
और फिर आगे नहीं उससे जाएंगे, सही हाँ बात है। रैशनलाइज करेंगे जो उससे पहले का है। बाद में वो क्या कहने वाला है वो बाद में आएगा। देन ओनली द लर्निंग प्रोसेस फॉर अ न्यू कमर विल बी इजी। ये विद्वान, हम विद्वानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसको पूरा दास कैपिटल याद है और वो कहां से भी रेफरेंस लाएगा और वो बाद में ऐसा कहा है इसलिए ये ऐसा होना जरूरी है। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे और हम नहीं करेंगे। आई विल नॉट डू इट। दिस इज माई सीरियस क्रिटिसिज्म कि ये तुम मत करो, सीखने वाले को तकलीफ होती है ना। हाँ, तो आगे बढ़े। चलिए सर। A further difficulty is caused by the original form of the variable capital. In our example, C dash is equal to 410 constant capital, 90 pounds variable capital plus 90 pounds surplus. But given, but 90 pounds is a given and therefore a constant quantity. Hence, it appears absurd to treat it as variable. But in fact, the term 90 pounds variable is here merely a symbol to show that this value undergoes a process. The portion of the capital invested in the purchase of labor power is a definite quantity of materialized labor, a constant value like the value of the labor power purchased. But in the process of production, the place of the 90 pounds is taken by the labor power in action. Dead labor is replaced by living labor, something stagnant by something flowing, a constant by a variable. The result is the reproduction of V plus an increment of V. From the point of view then of capitalist production, the whole process appears as the spontaneous variation of the originally constant value, which is transformed into labor power. Both the process and its result appear to be owing to this value. If therefore such expression as 90 pounds variable capital or so much self-expanding value appear contradictory, this is only because they bring to the surface a contradiction immanent in capitalist production. अभी इधर कैसा एक्सप्लेन करोगे? करो अभी। हम मुंह से कह रहे हैं वेरिएबल कैपिटल, है वो बोलते हैं वो मुंह जो से भी होता है। हाँ, मुंह से मुंह से कह मुंह रहे से हैं कि वेरिएबल कैपिटल है पर वो कांस्टेंट है। हाँ नहीं वो तो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है जो 90 रुपीज दे के खरीद किया है वो कांस्टेंट है। हाँ, वो 90 रुपीज दे के जो खरीद किया है वो कांस्टेंट है। तो बट वही कंस्टेंट अनदर 90 रुपीज को क्रिएट करता है, वो वेरिएबल है। हाँ 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 हाँ, तो इसीलिए वो 90 खरीद नहीं करने से, खरीद नहीं करता तो वो कांस्टेंट को खरीद नहीं करता तो ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। हाँ वो So वो a variable is a part of that 90 constant. So नहीं hence total the constant and the surplus will be variable. हाँ नहीं वो ये देखो ये रिफाइंड मेथड में वो मैंने इन द सेंस वेरिएबल कैपिटल is with reference to constant capital, That not constant with only labor reference, power. not with Only reference labor to the power. नहीं Only नहीं labor power. ऐसा नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएबल कैपिटल जो लेबर पावर है वो वेरिएबल इस ढंग से है क्योंकि उसने उसकी जिक्र पहले लास्ट चैप्टर में की है। वो वेरिएबल है, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा ऐसा कोई नहीं। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो वेरिएबल कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू एडिशन। However, that is therefore in relation to the capital advanced, that is the constant capital advance, this capital is variable. However, this capital itself, when it is brought into a relationship with the value of the product, this is becoming variable. समझा नहीं? यदि वो यदि वेरिएबल वो ना न वो होता, यदि वो 90 रुपीज ही प्रोड्यूस करता तो वो कांस्टेंट हो हाँ जाता। तो पर प्रोडक्ट में तो वेरिएबल वेरिएबल दिख रहा है ना, 90 का 180 हो रहा है, पर वो कह रहा है कि उधर वो कांस्टेंट है। उधर प्रोडक्ट के वैल्यू में 90 जो उसने वेरिएबल कैपिटल में डाला है वो कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है। वो यदि न होगा
तो तो सरप्लस वैल्यू वेरिएबल का नहीं हो पाएगा, नहीं, सरप्लस वैल्यू का जिक्र नहीं कर पाएंगे। कर पाएगा। वो हाँ इसलिए बोलता है भी, भी डस, हाँ इंक्रीमेंट ऑफ भी। हाँ वो भी से ही, वो भी को कांस्टेंट बोलता है, हाँ लेकिन वो कांस्टेंट होने से वो भी डट नहीं आता। वो हाँ जैसे सिंस इट बिकम्स बी डॉट, देन दैट स्मॉल सी इज ए वेरिएबल। हाँ। तो पढ़ो अभी कौन है, तो ठीक है ये मैं मैं पढ़ता हूँ। समझ रहे हैं ठीक ना। है ना? हाँ ये तो ठीक है सर, ठीक है। A further difficulty is caused by the original form of the variable capital. In our example, C dash is equal to 410 pound constant capital and 90 plus 90 pound variable capital plus 90 pound surplus. But 90 pound is a given and therefore a constant quantity. Hence, it appears absurd to treat it as variable. But in fact, the term 90 variable is here merely a symbol to show that this value undergoes a process. हाँ The process, the the po- portion of the capital invested in the purchase of labor power is definite quantity of materialized labor, a constant value like the value of labor power purchased. But in the process of production, the place of the 90 pound is taken by the labor power in action. Dead labor is replaced by living labor, something stagnant by something flowing, a constant by a variable. The result is the reproduction of V plus an increment of V. From the point of view of then of capitalist production, the whole process appears as the spontaneous variation of the original constant value, which is transformed into labor power. Both the process and its result appear to be owing to this value. If therefore such expression as 90 pound variable capital or so much self-expanding value appear contradictory, this is only because they bring to the surface a contradiction immanent in capitalist production. चल, तो कैपिटलिस्ट बोलता है वो जो कांस्टेंट कैपिटल है मेरे रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके लिए वो सरप्लस वैल्यू होता है। सुनिए सुनिए सुरजीत, मैं कमेंट्री हाँ लिख रहा हूँ ना, हाँ सर। ये ऐसा पैराग्राफ आएगा ना तो दिमाग हाँ, गोल गोल घूमने लगता है, टू राइट दैट पोर्शन ऑफ द कमेंट्री। ठीक। हाँ वो और अभी हमको दिख रहा है कि ये इतना जितना वो ठीक है, एज अ जनरल फ्रेमवर्क we have understood what he wants to tell us, but making it corresponding it to the sense that he is trying to bring out through the sentences and the paragraph is a very difficult proposition. I'll tell you for sure that it is a very difficult proposition. वो इतना simplistically नहीं होता है, तो जितना बिल्कुल हमको simplistically वो दिख रहा है उतना वो simplistic नहीं है। तो जब कमेंट्री आएगी तब उसके ऊपर में अभी दिख रहा है मेरे को कि इसके ऊपर और you have to, what I am saying is that we need to dwell on each para repeatedly before we are in a position to exactly draw conclusions as to what he wants to say. And what he wants to say he has written, but what is between the lines, व्हाट ही थिंक्स। what it is between the lines, you should take it up as a reader, you should know how to read it. This is not a textbook explaining point by point. This is a treatise that has been written with a particular objective, wherein he has attempted to the last point that no fallacy exists. ये बिल्कुल। उसकी खासियत है। तो चले, टाइम हुआ, टाइम हुआ सर, फिर टाइम कल हुआ मिलते हैं। क्या कल अब? मिलते हैं सर। हाँ, 1.5 पन्ना ही हो गया। हाँ सर। हाँ सर, बहुत ज्यादा। ठीक है। 1.5 ही अच्छा पन्ना। स्पीड, हाँ अच्छा स्पीड है सर। थोड़ा सा ये कॉम्प्ली वो है ना समझाने वाला, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर, हाँ, इस इसलिए तुम थोड़ा स्लो दिख रहा है। सुरजीत, सुरजीत, हाँ सर। एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसके ऊपर कमेंट्री तुम ट्राई करो ना लिखने का। हमको सर इंग्लिश इतना अच्छा नहीं लिखना, लिख सकता हूँ वही इसी। नहीं, उड़िया में करिए सर, उड़िया इम्पोर्टेंट है। ओरिया में ट्रांसलेट नहीं करो, कमेंट्री करो ओडिया में। कमेंट्री करो, कमेंट्री। हाँ, कमेंट्री करो। विष्णु आपको मैं फेसबुक में ऐड कर रहा हूँ।
फ्रेंड ठीक रिक्वेस्ट है, भेज रहा हूँ आपको। करिए सर, साथ करिए। करो करो साथ करो। साथ मेरा साथ कभी कभी भिड़ जाते हैं फेसबुक में। ठीक है। तुम्हारा सुरजीत, हाँ वो सर। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और वो क्या रिलीजन के ऊपर का जो कमेंट है वो तुमको ठीक पसंद आया कि नहीं आया? तो नहीं, वो दैट शुड बी सी, you should look at it in the perspective which Marx throws up, a very general perspective on looking at things in particular is very important, and it has lot of manifestations. सर सर कल जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 3 को, हाँ, वो पढ़े क्या? नहीं नहीं वो उसका नहीं पढ़ा। उसका कंसिक्वेंस क्या है, क्या होने वाला है? देखो, ये सब मीडिएटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है करके कहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, when you put a bacteria under the microscope, just because you have in memory that what you have put under the microscope is a bacteria, you think that whatever you see in the bacteria is what the bacteria is. However, when you go to higher levels, this itself creates problem, because you have seen the bacteria under a microscope no different than what you have seen a tree by your open eyes, and you cannot see anything more than what it appears when you see a tree. सर अभी क्या हो रहा है सर, वो तो आप तो बोल रहे हैं। अभी जो इन्वेंशन किया, तो आप देखेंगे टॉर्च लाइट का स्विच मारने का बाद वो लाइट कैसे अंदर को भेद करके धीरे धीरे आगे जा रहा है। देखता हूं, मैं पढ़ता हूं एक बार उसका ये नोबेल वो प्राइज। वो वो सर वो जो इलेक्ट्रॉन मिल के मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल माने एटम मिल के मॉलिक्यूल होता है, वो तो सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। अरे वो पर वो देखो, सर कैसे होता है? वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन स्टेज में वो एक्साइटेड होके एक ऑर्बिट से के दूसरा ऑर्बिट में जाता है और कंबाइन होता है दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन का साथ, वो कैसे हो रहा है? वो उसको वो पकड़ लिया है, वो मूवमेंट को वो माप लिया है। वो इसीलिए उसको वो नोबेल प्राइज मिला। देखता हूं वो जो मैं ऑटो सेकंड। इतना मैं केमिस्ट्री में, मैं तो यू देखो, मैं पढ़ता हूं, हमारे खानदान में साइंस होने के वजह से उसका हमारे ऊपर संस्कार है, पर वो साइंस में जो कमियां हैं वो भी हमको पता है, क्योंकि मैं सोशल साइंटिस्ट भी हूँ और वो तो मैंने पढ़ा है। पर बात ऐसी है, जो साइंटिस्ट को लगता है उसने ढूंढा है और वही सत्य है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट रिक्रिएटिंग, इट इज वो तो जस्ट सर रिक्रिएटिंग वो अ तो सर थियोरेटिकल वो सर फ्रेमवर्क टू वर्क थ्योरेटिकल अप। नहीं है। वो जो सब हम सब जो आज जो ये आप गूगल मीट कर रहे हैं, को हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर खोल के बैठ रहे हैं, मोबाइल पकड़ रहे हैं, वो सब तो सब साइंस क्या है ना, और कुछ नहीं क्या है। वो होगा, वो होगा, वही तो सर पर वही तो सर सत्य है। दिस इज इट द ट्रूथ। दैट इज जो नॉट नहीं द। जो नहीं देख सकते वो कैसे ट्रूथ होगा साहब? जो देखते हैं, जिसको क्या इसके पकड़ते हैं, वही ऊपर तो सर ट्रूथ है। देखो, देखो, a reproduction of a concrete entity as a thought entity, that thought entity still continues just as a instrument for humankind to understand the materiality of the object that is investigating. He वो checks it थॉट with he checks it with the whether the thought process, the theoretical aspects that he has understood, he puts it into the practice and tries यस to find out whether it agrees with it or not. यस If science has developed because at every point in its evolution it has found discrepancies. Yes. Otherwise, there will be no science. There हाँ, is हाँ, there is so discrepancy. तो There is contradiction. तो इधर मामला That's है। the science. हाँ, हाँ, इधर हाँ, मामला ये है कि वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, वो हमारे क्या है सर कंप्लीट ट्रूथ? नहीं, कंप्लीट ट्रूथ क्या? हम वो मालूम नहीं है ना,
तो हमको समझा ये जिसका क्या है। मालूम नहीं है उसको क्यों, जिसका मालूम नहीं है उसको क्यों विश्वास करे सर, उसका नहीं ऊपर नहीं क्यों ट्रस्ट ट्रस्ट रखे। नहीं वो जिसका पैसे मालूम है उसको ही इन ट्रस्ट ट्रस्ट मान लेते हैं ना। सुनिए सुनिए, जो कोई इन्वेंशंस गेले 200 बरस में हुए वो पैसे के लिए हुए, वो ट्रुथ के वो लिए तो नहीं सर हुए। दूसरा बात है, वो वो सर ट्रुथ सर दूसरा ये बात तो है बहुत पैसा। ही बहुत स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट है कि हाँ पैसे के लिए हुए। जैसे जिन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ वो भले वो पैसे पैसे में मतलब उन उन इन्वेंशंस का या उन